Iron deficiency anemia. The most common nutritional anemia due to iron deficiency. Iron deficiency anemia is the most common nutritional anemia due to iron deficiency. Most common nutritional anemia is iron deficiency anemia. It is the most common nutritional anemia. Etiology: four etiologies. Inadequate intake in infants, malabsorption due to sprue or gastrectomy, malabsorption due to sprue or gastrectomy, increased demand during pregnancy, chronic blood loss due to peptic ulcer or colonic cancer or menstruation. Inadequate intake is insufficient in infants, malabsorption due to sprue or gastrectomy, increased demand during pregnancy, and chronic blood loss due to peptic ulcer, colonic cancer, or menstruation. Chronic blood loss due to peptic ulcer, colonic cancer, or menstruation. Etiology of iron deficiency anemia: inadequate intake of iron in infants, malabsorption due to sprue or gastrectomy, increased demand due to pregnancy, chronic blood loss due to peptic ulcer, colonic cancer, or menstruation. Chronic blood loss due to colonic cancer, menstruation, or peptic ulcer. Four etiologies: inadequate intake in infants, malabsorption due to sprue or gastrectomy, increased demand during pregnancy, chronic blood loss due to peptic ulcer, colonic cancer, or menstruation. Pathogenesis: depletion of iron stores results in inadequate synthesis of hemoglobin causing anemia. So, depletion of iron stores results in inadequate synthesis of hemoglobin causing anemia. So the cause is depletion of iron stores, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का inadequate synthesis होगा and this leads to anemia. Decreased depletion of iron stores lead to inadequate synthesis of anemia causing leads to inadequate synthesis of hemoglobin causing anemia. Stages of iron deficiency. There are three stages of iron deficiency. Stage 1, iron depletion. Stage 2, low transport iron and iron deficient erythropoiesis. Low transport iron and iron deficient erythropoiesis. Stage 3 is low hemoglobin production or iron deficiency anemia. Stages of iron deficiency. Stage 1 is iron depletion. Stage 1 is iron depletion. Stage 2 is low transport iron and iron deficient erythropoiesis. Low transport iron and iron deficient erythropoiesis. Stage 3 is low hemoglobin production or iron deficiency anemia. Stage 1 is iron depletion. Stage 2, low transport iron and iron deficient erythropoiesis. Stage 3 is low hemoglobin production or iron deficiency anemia. Stages of iron deficiency. Stage 1 is iron depletion. Depletion of storage iron, that is low serum ferritin. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आयरन इज़ नॉर्मल, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट आयरन दैट इज़ सीरम आयरन और TIBC इज़ नॉर्मल, MCV इज़ नॉर्मल, हीमोग्लोबिन इज़ नॉर्मल. तो स्टेज 1 में सिर्फ जो स्टोरेज आयरन है उसका डिप्लीशन होगा, दैट इज़ जो सीरम फेरिटिन है वो कम हो जाएगा. स्टोरेज आयरन का डिप्लीशन होगा, जो सीरम फेरिटिन है दैट विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट आयरन है दैट विल बी नॉर्मल, सीरम आयरन विल बी नॉर्मल, TIBC विल बी नॉर्मल, नॉर्मल MCV एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन. ठीक है, स्टेज 1 में सिर्फ देयर इज़ लो सीरम फेरिटिन लेवल, देयर इज़ डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज आयरन, transport iron is normal, serum iron is normal, TIBC is normal, MCV is normal, hemoglobin is normal. Stage 2 is low transport iron or iron deficient erythropoiesis. Stage 2 is low transport iron or iron deficient erythropoiesis. स्टोरेज आयरन का डिप्लीशन होगा,
ट्रांसपोर्ट आयरन जो है वो भी कम हो जाएगा, बट एमसीवी और हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है। स्टेज 2 में स्टोरेज आयरन का डिप्लीशन होगा, जो ट्रांसपोर्ट आयरन है वो भी कम हो जाएगा, बट एमसीवी और हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है। स्टेज 3 दैट इज़ लो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन और आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, यहाँ पे स्टोरेज आयरन का डिप्लीशन होगा, ट्रांसपोर्ट आयरन भी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी कम होगा, एमसीवी भी कम होगा और एमसीएच भी कम होगा। स्टेज 3 में सब कम हो जाता है। देयर इज़ डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज आयरन, देयर इज़ लो ट्रांसपोर्ट आयरन, लो हीमोग्लोबिन, लो एमसीवी एंड लो एमसीएच। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: फटीग, पेलर, एलोपेशिया, कोइलोनिकिया, पीका, प्लमर विंसन syndrome. Clinical presentation of iron deficiency anemia: fatigue, pallor, alopecia. Fatigue, pallor, alopecia. Fatigue, pallor, alopecia. Koilonychia, pica, plummer Vinson syndrome. Fatigue, pallor, alopecia. Koilonychia, pica, plummer Vinson syndrome. Fatigue, pallor, alopecia, koilonychia, pica and plummer Vinson syndrome. So, investigations for iron deficiency anemia. CBC में hemoglobin will be low, low hemoglobin, PCV, MCV, MCH, MCHC, increased RDW. hemoglobin, PCV, MCV, MCH और MCHC कम होगा। लो hemoglobin, MCH, MCV, PCV, MCH ये सब लो होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, पीसीवी कम होगा, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी ये सब रिड्यूस्ड रहेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड होगा आरडीडब्ल्यू। लो हीमोग्लोबिन, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी एंड इंक्रीज्ड आरडीडब्ल्यू, ठीक है। आरडीडब्ल्यू इज इंक्रीज्ड इन आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। पेरिफेरल स्मीयर: RBCs will be microcytic hypochromic red cells, poikilocytosis and elliptocytes are noted. Microcytic and hypochromic, microcytic, hypochromic, RBCs, poikilocytosis and elliptocytes, ठीक है। सो RBCs कैसा होगा? माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स, poikilocytosis and elliptocytes. Hypochromic and microcytic RBCs, poikilocytosis and elliptocytes are noted. Iron deficiency anemia में poikilocytosis and elliptocytes are noted. RBCs, microcytic hypochromic RBCs, poikilocytosis and elliptocytes are noted. Bone marrow, hypercellular with erythroid hyperplasia. Bone marrow will be hypercellular with erythroid hyperplasia. Iron deficiency anemia में hypercellular marrow होता है and their hypercellular marrow with erythroid hyperplasia. Erythroid precursors show micronormoblastic changes. The erythroid precursors show micronormoblastic changes. Micronormoblasts are small precursor cells with reduced amount of cytoplasm that is vacuolated and has ragged cell borders. Hemoglobinization of the cytoplasm is defective. Okay. The erythroid precursors show micronormoblastic changes. Micronormoblast जो होते हैं वो small precursor cells होंगे जिसमें reduced amount of cytoplasm होगा. Small precursor cells with reduced amount of cytoplasm and the cytoplasm is vacuolated and has ragged cell borders. Hemoglobinization of the cytoplasm is defective. Micronormoblasts are small precursor cells with reduced amount of cytoplasm that is vacuolated and has ragged cell borders. Hemoglobinization of the cytoplasm is defective. Lack of stainable iron from macrophages demonstrated with Pohl's stain. Lack of stainable iron from macrophages demonstrated with Pohl's stain. Lack of stainable iron from macrophages demonstrated with Pohl's stain.
आयरन स्टडीज़ में लो सीरम आयरन एंड फेरिटिन, लो सीरम आयरन एंड फेरिटिन, लो ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन, सीरम आयरन और सीरम फेरिटिन कम होता है, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन इज ऑल्सो लो, increased TIBC, TIBC is increased and serum soluble transferrin receptor is also increased. तो सीरम आयरन कम हो जाता है, सीरम फेरिटिन कम हो जाता है, सीरम आयरन कम होता है, सीरम फेरिटिन कम हो जाएगा, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज़ क्या होगा, TIBC इंक्रीज़ होता है और ट्रांसफेरन रिसेप्टर जो है सीरम सॉल्युबल ट्रांसफेरन रिसेप्टर वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज TIBC एंड सीरम soluble transferrin receptor. Free erythrocyte protoporphyrin is increased. Free erythrocyte protoporphyrin is increased. Free erythrocyte protoporphyrin is increased. Differential diagnosis में differential diagnosis of IDA is anemia of chronic disease, thalassemia, sideroblastic anemia, anemia of chronic disease, thalassemia, sideroblastic anemia, and lead poisoning. Lead poisoning is also a differential diagnosis of IDA. Anemia of chronic disease, thalassemia, sideroblastic anemia, and lead poisoning.